Assalamu alaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne AAM-Tech. J'espère que tout va bien. हम स्टार्ट करते हैं आज डेफिनेट आर्टिकल का क्विज। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, What is the definite article for masculine singular nouns starting with consonant? Option are lu, la, le, l apostrophe. क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं कि कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है जो कि आपके पास मैस्कुलिन सिंगुलर यानी कि मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर के लिए यूज होता है। ठीक है, आंसर है लू। लू आपके पास यूज होता है एज एन मैस्कुलिन सिंगुलर आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डेफिनेट आर्टिकल फॉर द वर्ड लिव्र, जिसको हम बुक कहते हैं। लू, ला, ले, एल apostrophe. The answer is le. Le livre. Third question है, which definite article is used before feminine singular noun starting with a consonant? आंसर है आपके पास ला। फेमिनिन सिंगुलर आपके पास कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल ला। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, अपने ब्लैंक फिल करनी है। डैश शिया द डॉग। ठीक है, ऑप्शंस आर लू, ला, ले, एल apostrophe. Option answer is Lucia. What is the definite article of masculine plural noun? Le, la, le, l apostrophe. सिंपल सी बात है, प्लूरल आपके पास फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, यूज ले होता है प्लूरल में। Choose the correct definite article for the word Amy. Amy किसे बोलते हैं? फ्रेंड को। लू, ला, ले, एल apostrophe. ऑप्शंस है आपके पास। The answer is ले। फ्रेंड्स है ना, प्लूरल आ रहा है तो ले यूज होगा। Which definite article is used before feminine plural? Answer is ले। ब्लैंक फिल करनी है। डैश फ्लeur, the flowers. The answer is ले। मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो,
प्लूरल आ जाए तो डेफिनेट आर्टिकल क्या लगेगा? ले। What is the definite article for masculine singular nouns starting with vowel or silent H? कौन कौन से हैं? लू, ला, ले, एल एपोस्ट्रोफ। सिंपल आंसर है आपके पास एल एपोस्ट्रोफ। Choose the correct definite article for the word om. मैन को कहते हैं फ्रेंच में। लू, ला, ले, एल एपोस्ट्रोफ। पेन में रखें। एच से स्टार्ट हो रहा है, आश से। आंसर इज एल एपोस्ट्रोफ।